The pendulum of a clock is replaced by a spring mass system with the spring having spring constant 0.1 Newton per meter. What mass should be attached to the spring? Time period जो पेंडुलम क्लॉक है उसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड. स्प्रिंग कांस्टेंट K is 0.1 Newton per meter, and suppose required mass is m kg. Then T will be 2 pi m by k under root 2 is equal to 2 pi m upon 0.1 under root, और 1 is equal to pi m by 0.1 under root. बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो 1 इज पाई स्क्वायर इंटू m by 0.1. तो m इज इक्वल टू 0.1 बाई पाई स्क्वायर kg और 100 बाई पाई स्क्वायर ग्राम और अप्रोक्सीमेट 10 ग्राम.